So, hello everyone. Today in this video we are going to look IoT enabled technologies. There are several IoT enabled technologies such as wireless sensor networks, cloud computing, big data analytics, embedded systems, security protocols and architectures, communication protocols, web services, mobile internet and semantic search engines. So, in this video we are going to look one by one. So first of all, let's come to the wireless sensor network. Basically, wireless sensor networks is nothing but it comprises of distributed devices with sensors which are used to monitor the environmental and physical conditions. मतलब हिंदी भाषा में आसान में समझाया जाए, जो कि एनवायरमेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस होती है उनको मॉनिटर करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस का जो होता है ना सेंसर्स के अलोंग विद, जो कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में कंप्राइज किया हुआ होता है. अब इसका एक वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पर जिगबी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय वायरलेस सेंसर नेटवर्क. अब ये जिगबी कौन सी कंपनी है इसको हम डिटेल में जानेंगे. अब आगे देखते हैं. वायरलेस सेंसर नेटवर्क आर यूज्ड इन IoT systems are described as follows. That is, using the wireless sensor networks, we can do weather monitoring system which collect humidity, temperature and other data which is aggregated and analyzed. If you want to see the such projects, weather monitoring systems, the one of the project which I have done, that is weather monitoring system. Let me show you. Weather monitor live.webhostam.com. Let me see whether it's working or not or something. Okay, I will show you. Basically, Linktree is a such platform where you can create your own resume type, that is own dashboard ना, portfolio जैसे बोल सकते हैं. You can create your portfolio in this Linktree. So this is the project of weather monitor live था. Okay, not issues. साइट का थोड़ा सा होस्टिंग का प्रॉब्लम होता है कभी कभी. सो ये कुछ ऑथेंटिकेशन किया था एंड इट कंप्राइजेस सच ESP वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन लाइव. अब इसका जो सोर्स कोड अगर किसको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं. दिस experiment, this project contains some sensors which are able to collect the data from various environmental situations, that is temperature and humidity sensor, for that is DHT11 sensor, rain sensor. We have used these sensors which collect the data of temperature, humidity, pressure, dew point, pressure claim, barometric sensor we have used for that. Okay, so now come to our next point where we was home. So weather monitoring system which collects such a environmental factors using, these are the used WSN use these systems. Okay, so indoor air quality monitoring system, indoor मतलब जो air quality है, ठीक है. Soil moisture monitoring system, surveillance systems and smart grids. These are some of the IoT systems which are used through WSN, that is wireless sensor network. So I hope wireless sensor network is clear to all of you. This is last one of the another example, that is structural health monitoring systems. हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ इंडस्ट्री में काफ़ी एप्लीकेशंस है IoT के. नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड के बारे में तो वी नो दैट सर्विसेज ऑफर्ड होते हैं काफ़ी तरह की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज: infrastructure as a service, IaaS, PaaS and SaaS, that is platform as service and software as service. And it is nothing but the IaaS provides user ability to provision computing and storage resources, के लिए, और these resources are provided to the users as virtual machine instances. Next is platform as service, and in the platform as service provide users the ability
to develop and deploy the application in the platform as a service, in the cloud computing. To develop and deploy the applications such as अमेजोन का AWS सर्वर बोल सकते हो, वो इस टाइप के PWS सर्विस तो प्रोवाइड करता ही करता है. And in the cloud using development tools, API, software libraries, and services provided by cloud service provider. Software as a service में क्या होता है? It provides user a complete software application or user interface to application itself. These types of three services are used in offered in the different forms of cloud computing. Now another is big data analytics, and obviously big data analytics is very important. The sensor data generated by IoT systems must be very large, as it is continuously collecting the sensor data. Whether data is continuously collected, it is too much big. Then machine sensor data collected from sensors, which is established in industrial and energy systems. Health and fitness data, data generated by IoT systems for location tracking vehicles. लोकेशन ट्रैकिंग, ये सबसे मतलब जो हमारे लोकेशन, हर एक डिवाइस में लोकेशन ट्रैकिंग होता है, और उसकी जो डेटा है ना, गूगल पर यदि आपने देख लिया होगा तो आपको पूरी डिटेल में लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में पता चल जाएगा. देखिए, आपको यदि दिखाना ही हो तो जो गूगल पर यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट, यहाँ पर आप लोकेशन की पूरी डिटेल में हिस्ट्री जान सकते हैं. देखिए, सिक्योरिटी में फाइंड योर डिवाइस, यदि किसी का मोबाइल लॉस्ट भी हो जाता है ना, तो उस टाइप का आता है. यहाँ पर आप जैसे ही किसी टैबलेट के ऊपर टिक करोगे तो लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा. तो डेटा जनरेटेड बाय IoT systems for location. ओके, डेटा जनरेटेड बाय रिटेल इन्वेंट्री मॉनिटरिंग सिस्टम्स. ये सब बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में था. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. अब किसी भी डिवाइसेस में IoT के बारे में तो हमने जान ही लिया था कि कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज होता है. अब कम्युनिकेशन करने के लिए तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है. जैसे कि हम मेल के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. इंटरनेट यूज करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है. ऐसे कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं. अब जो हमने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम किया था ना, उसमें भी एक प्रोटोकॉल कुछ यूज किए थे. HTTP प्रोटोकॉल के जरिए हम जो डेटा वाईफाई के थ्रू, वाईफाई मॉड्यूल नोड यूज किया था, उसके जरिए हम भेजते थे लाइव सर्वर को. इस सर्वर को, जो कि इस पे वेदर स्टेशन सर्वर हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर डेटा आता था. तो ठीक है ना, आगे इट्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच अलाउ डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा ओवर द नेटवर्क, and it defines the exchange formats. Okay, so this is communication protocols. Then last is embedded system. It is a computer system that has computer hardware and software. Embedded system means it is nothing but the system which is embedded itself in it, and it is a computer system that has computer hardware and software embedded to perform specific tasks. Embedded system ranges from low cost miniaturized devices such as digital watches. Yeah, these are the most common examples of embedded systems. Digital cameras, vending machines, appliances, etc. These are all the wireless sensor networks. So thank you.